हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। पहले आता तुम्हारा जीरो नंबर से लेके 99 की जर्नी। कैट 2022 दिया भाई ने और इसका है 0 मार्क्स। मेरे पास इसका स्कोर कार्ड भी है। मैं बोला मैंने स्कोर कार्ड भेज, तू झूठ बोल रहा है। दिस इज इज एप्लीकेशन आईडी एंड तेरा ही है ना भाई ये? बिल्कुल सर, मेरा ही है। 0 मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी एंड वहां से इसने छक्के मारे एंड दिस ईयर इज स्कोरिंग 99.31। सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू बेस्ट यार, यू केप्ट द कैटकिंग फ्लैग हाई। सारी तेरी मेहनत है यार। एंड हाउ डज इट फील, बाय द वे, हाउ डज इट फील 99.31 इन वर्बल एबिलिटी नाउ फ्रॉम जीरो? It feels great. Obviously, once you accomplish something, you obviously, appreciate all the effort that you have put into it. और जैसे कि वर्बल तो आई बिलीव कि सबको ने अपना इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स यू, मेक्स यू अ वेरी वेल रेड पर्सन. सो आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज वेल. सुपर सुपर। आज पूरा हैक बता दे भाई, से अब सब पूछेंगे। सपोज करो तुम भी जीरो लेवल पे हो, ठीक है? इमेजिन करते हैं हर बच्चा भी जीरो लेवल पे है, उसको लेके जाना 99 परसेंटाइल और उसको भी कॉल्स चाहिए बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, SPJain ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स बिगिन। क्या करें सबसे पहले, क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी हेल्प की, और हाउ वाज कैटकिंग इन योर एंटायर जर्नी एज वेल? लेट्स गो। यस सर, सो ऑब्वियसली आई एम इंजीनियर, सो मेरा तो हमेशा से था कि पॉइंट्स में हम लोग बहुत मार्क्स लेकर आएंगे. बट बिफोर यू गो इन टू एंड गिव द कैट, आई वांट टू मेक यू रियलाइज कि for colleges like FMS and IIM Bangalore, if you see how their CAT weightage is calculated, you will see कि verbal का weightage is more than DILR and quants. So that is a very important factor कि in your selection or your rejection, maybe a person with same percentile won't get a call because उसका verbal में कम है and quant में ज़्यादा है and तुम्हारा verbal में ज़्यादा है. So you always have to keep that in mind. And when it comes to preparation, so first of all, I'll give you a reference. I was a student जो सिर्फ English के textbook पढ़ता था स्कूल में. I was not at all a well-read person. So I think कि A on essay, जो कि बहुत ज़्यादा important है, मेरे को लग रहा है मेरी journey में from my analysis, और मेरे को लगता है A on essay is a very must. If you should read it, because that will pose you a very competitive passages जो कि you'll be very it will be very helpful to you when you go down and give that paper. So I think the reading is a must, and A on essays is the best thing that I started reading during my preparation this time. And sir, वो तो अब A on essays तो सर आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे A on essays से. And people who are part of the CATking family, do not miss the verbal Mondays and verbal Wednesdays. That are very important because first of all, in CATking, they introduce vocabulary. They give vocabulary words each and every time you go in the class, and those words also get repeated, so they get imprinted in your mind. And I believe कि लोग vocabulary का ऐसे वो नहीं है कि vocabulary के questions आएंगे, but you need to have a decent vocabulary to crack 99 percentile in verbal ability, and I think that is a very very must. सुपर यार, ग्रेट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक नाउ। एक पार्ट आरसी का होता है, एक पार्ट जिनको नहीं पता है भाई, वर्बल सेक्शन 2 पार्ट का होता है। एक वर्बल पार्ट है और एक आरसी पार्ट है। आरसी पार्ट इज नियरली 16 क्वेश्चंस एंड द वर्बल पार्ट इज नियरली 8 क्वेश्चंस एज पर द लास्ट 2-3 ईयर्स, जब से क्वेश्चन चेंज हुए 66 क्वेश्चंस। तो उसका प्रिपरेशन प्लान बता यार। उसमें पेपर में तूने कैसे किया था वो अपन बाद में बात करते हैं, कितने तूने आरसी सॉल्व किए थे। बट लेट्स टॉक अबाउट इन दोनों में से पहला कोई सेक्शन करने का कुछ हैबिट होनी चाहिए, एज्यूमिंग आई एम जीरो राइट नाउ। So sir, if assuming that you are zero right now, so I would suggest कि RC is the best thing that there is in CAT. RC will boost your score if you improve and if you work on RCs. So get an understanding of this thing first of all, that there are 16 questions in RC and 88 questions in verbal ability. In verbal ability, there are also 4 subsections. This year, all 4 subsections were used, 2 questions of each. So, for example, if you are preparing for RCs, then you are able to solve 16 questions. But if you are preparing for one section of that verbal ability, you will be only be able to solve 2 questions. And even then, the accuracy there is much lower than what there is in RC. And I think RC is make or break when it comes to verbal section. You have to be very, dedicated while reading and while understanding what the RCs are, and you have to do you have to put in all your efforts in RC, I would say, and RC will
probably make your score, and you know you will be here like me one day. क्या बात है, क्या बात है, ये भी ना बात, ये मैं इनको बोलता हूँ यार. नाउ यू आर ऑन दिस साइड ऑफ स्क्रीन राइट, पहले तो उस साइड में बैठ के बच्चों की बातें सुनता, नाउ ये रोल मॉडल और तू लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है यार. कमिंग बैक टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. तो पेपर के अंदर 4 आरसीज आते हैं राइट, 4 आरसीज, 16 क्वेश्चन, चार क्वेश्चन के. सो व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट 99 percentile plus, how many RCs you need to do out of the all 4 RCs? Did you do all 4? You did 3, 4? और जो वर्बल वाला पार्ट है, जो पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, उसके अंदर तेरा कितना कंट्रीब्यूशन, कितने तूने अटेम्प्ट करके आया था? So when it comes to RC, I think सबकी reading speed अलग होती है, and as you all know, I was 0, so मेरी reading speed was very slow. And one of the biggest mistake I used to do, that there is a word and I used to misread it for another word. So that is one thing that, you know, was a very big challenge for me. So when it came to RC, I practiced a lot and I was able to solve 3 RC at that point and 8 VA questions. But I always used to do RC first, because RC requires a lot of concentration. If you concentrate properly, you will be able to answer a lot of questions. So my strategy was I would used to do 2 RC, then 8 VA questions, and then 2 RC again. Because VA question, in some of them there is no negative marking. This year in my slot there was one compulsory question also that you have to do that question as well. Right. So yeah, so it was like that. So I believe RC I used to do first, and I think it is not a like fixed strategy for everyone. Everyone needs to figure out what are their strengths and what are their weaknesses. But RC I think is very important. Superb, great. Let's talk a little bit about the rules in the verbal part of it. So I'm a big fan of rules. You were a student with us, you know that, right? 8 rule लगा लो, 10 rule लगा लो. How important are the rules? और कोई rule याद भी है तेरे को, वही बता. In the verbal section of para completion या para jumble, chronological order, उसके अंदर बता क्या करना चाहिए? Sir, verbal ability to so verbal abilities, everything is related to rules itself. If you are able to fit them into rules, you will get it correct. And there is no guarantee that even if sometimes if you think that it is right, it will be right. It won't be right. You need a set of rules. You need to follow those rules. And if you, so for example, one rule was that chronological order, that हाँ सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ, फिर वो under 16 खेला, फिर वो उसने 100 centuries बनाई. So you have to follow chronological order. Right. ऐसे बहुत सारे rules थे. I won't leak the secrets out on YouTube. उसके लिए तो CATking join कीजिए सब, तब पता चलेगा सारे अच्छे rules. There are many rules. Even in interviews as well, there are very many rules that you all have shared with us. Right. And I think those rules are very important, especially when it comes to verbal ability. In RC, it is more about, in RC also, there were also rules. Yeah. That, and the training that you gave us that, okay, judge this option as it is 70% correct, it is 100% correct, it is not at all correct. That also helps your understanding of how the questions are being framed. करेक्ट. दैट्स याद है भाई तेरे को, क्या बात है. गुड. तब मैं क्लासेस करता था ना. सुपर यार, सुपर. प्राउड ऑफ यू मैन. यू केप्ट द CATking फ्लैग हाई. और वर्बल तो मेरे को और भी चौड़ हो रही है कि भाई हमारा बच्चा 0 से 99 लेके आया. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर सीन अ गाय लाइक यू, ध्रुव. यू सच अ हम्बल गाय, एंड यू हैव डन इट मैन, यू डन इट. सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. क्या बात है. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स लिसनिंग टू अस, डू इट इन द लाइक बटन फॉर श्योर. और अगले साल अगर तुम्हारा पिछले कैट में 0 आया है, या अभी लग रहा है तुम्हारे मॉक के अंदर 0 नंबर आ रहा है, तो भाई अगले साल तुम भी 99 मार सकते हो और तुम भी ये सारी कॉल्स ले सकते हो. ग्रेट यार. थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन ध्रुव. ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉल्स राइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर FMS एज वेल. थैंक यू सर. थैंक यू. टेक केयर. हैव अ गुड डे. बाय बाय. थैंक यू.